Hello, students. Once again, welcome at your own platform, that is CPJ Academy. So, yes, in today's lecture, we will going to discuss about the breathing and exchange of gases. So, starting में सबसे पहले हम terms को ही समझ लेते हैं. I think this is the best way to understand anything. So, yes, let's discuss. See, breathing, as you know, it's here we will we will going to talk about the exhaling or expiration, you can say, or inhaling. Okay, so breathing is something, you can say, it's when you breathe in, you are taking air inside your body from the outside or from the atmosphere, and also you have to exhale that air, that CO2, out of your body to the atmosphere. Okay, although yes, we know कि एक breathing term होती है, एक आपकी दूसरी term होती है, that is respiration. I will going to discuss that in the upcoming slide, but right now we will just going to discuss that definition of the chapter on it. Okay, then this is the second thing, you can say, exchange of gases. Exchange of gases में basically what we will going to discuss, आपको पता है जो air है, यहाँ पर मैं अभी सिर्फ air की ही बात कर रही हूँ, not O2 और CO2. ठीक है, नो डाउट हम बेसिकली इन्हीं को लेके चलेंगे. बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने बेसिकली क्या देखना है, ये जो एयर है बेसिकली वो क्या है, एल्वियोलाई से ब्लड में कैसे जा रही है, एंड देन फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, एंड ऑल्सो that air is passing from this blood to alveoli, but which is that, वो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, we will going to discuss that. And let's say if I am saying it's oxygen, so why oxygen is following, like from the alveoli to the blood, why it is transferred from the alveoli to blood, not from blood to alveoli. Yes, we will going to discuss that thing. Okay, so yes, stay connected. I think breathing सबको पता होगी कि क्या होती है. Just tell me one thing, is breathing and respiration are same or different? Just tell me that. See, breathing and respiration are not same. They are different thing. See, आपने बहुत सारा खाना खा लिया, ठीक है, अब आपकी बॉडी में उसका डाइजेशन होगा, अब उसका ब्रेक डाउन होगा. Okay, so that is a kind of respiration because it will definitely release a certain amount of energy. So respiration, it's a kind of catabolic reaction that is going inside your body. Okay, it's a catabolic reaction basically. While, or you can say that respiration is an active process. This is active process. Okay, and if I'm talking about the breathing, जैसा कि आप बोलते हैं exhaling or inhaling, yes, this is breathing. Now what about that, is that active or passive one? See, this inspiration, whenever you are breathe in, when you are taking air in, okay, then that type of thing will be termed as active process, while this exhaling is the passive one. Just have a look the difference between them so that आपके लिए बहुत से अच्छे से clear हो जाएगा. Breathing, as you know, it involves intake of oxygen and release of carbon dioxide. Okay, respiration is more complex. See, breathing is a type of respiration, is a part of respiration. You can say respiration is a universe, while breathing is just a small country or small area in that universe. Okay, so breathing is a part of respiration, while respiration is more complex and broader, you can say. It's a narrow one. Okay, it's a narrow one and it's broader one. Okay, so yes, it includes breakdown of food to release energy. That means जो energy है वो release होगी. Clear? It's a physical process, that is exchange of gases is taking place in breathing, while in respiration it's a biochemical process because lots of enzyme is gonna work here, lots of chemical reaction will gonna happen there. That's why ultimately बहुत सारी energy release होगी. Okay, breathing, it involves breathing organs like lungs. Okay, breathing organs involved होंगे. As I just said कि narrow concept है breathing, as it's just a part of the respiration, while this respiration it occurs at the cellular level. One major thing that you have to remember here, see जो red blood cells होती हैं, just tell me that thing first.
क्या ये एरोबिकली रेस्पायर करती है और ब्रीथ करती है या फिर एनारोबिकली? सी आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, दे डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, रिमेंबर दिस थिंग, that question is very important from the point of view of NEET, even in your exams too. Okay, so RBCs don't have mitochondria. If they don't have mitochondria, so how they respire or how they breathe? They breathe anaerobically. Okay, that means they don't require oxygen. Okay, they don't have mitochondria. So which kind of pathway they are using for that? That is pentose phosphate pathway. Okay, that is pentose phosphate, ये पता नहीं क्यों गायब हो जाता है ऐसे, इट्स ओके, pathway. The respiratory organs, अब सबका respiratory organs जो है वो सेम नहीं होते. Like if I am talking about myself or you, yes, we are breathing with our lungs, no doubt, there is no doubt, no in that. But what about the lower animals or lower invertebrates or higher invertebrates? Different होते हैं, ठीक है? Like if you want to unlock some any kind of lock, so there must be another key, a different key. Okay, you have a same key for the same lock, but for the different lock you have to apply or you have to unlock that lock with a different key. So same in that case, अगर organism अलग है, वो lower है या higher है, उसके according उसका जो respiratory organ है, that will change. Like in case of sponges, you must remember in the porifera, like we have discussed in the animal kingdom, porifera, these are one of the simplest one जिनका cellular level ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ सेल्स के बने हैं, बट दे हैव पोर्स एज द नेम सजेस्ट. तो इनमें सिंपली डिफ्यूजन से बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन से काम चल जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ यू कैन से डिफ्यूजन. ओके, डिफ्यूजन से इनमें काम चल जाता है. अब उनका क्या, जो वाटर में रहते हैं, जैसे फिशेज है आपकी, ये एक्वेटिक होती है, ठीक है, जो एक्वेटिक है उनका होता है गिल से रेस्पिरेटरी ऑर्गन. एंड इन दैट केस द मोड ऑफ रेस्पिरेशन is a bronchial respiration. No doubt that we are also having bronchioles or the what you say bronchia, but we are not respiring with that. It's just a way कि वहां से air जरूर जा रही है, but that's not mode of respiration in us. We have a pulmonary respiration. This pulmonary word is used for the lungs. That means we respire by the lungs. While in case of aquatic, it's a bronchial respiration. Okay. Like in case of a king crab, they are respiring with the help of book gills. That's why it's a book gill respiration. What about the amphibians? See, if I'm talking about particularly amphibians, as you know, amphibians, that means amphi means both. That means they can respire by their skin, by their gills, because they have also that, by their lungs too. Because ये एक्वेटिक भी होते हैं, पानी में भी रहते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं. दैट मीन्स दे आर आल्सो लिविंग ऑन लैंड, so they can use any kind of thing. So the point that you have to remember here, for the skin, like if they are using skin for the respiration, for the breathing, so what you will say, it's a kind of cutaneous respiration. Okay, and what about the insects? Insects are respiring from network of tubes. Okay, and that network of tubes, आप इन्हें बोलते हैं trachea. We have also the trachea, okay, but we are not respiring with that. It's just a passage for the air on. It's just a windpipe. It's just it's just a passage, you can say. So trachea. So that's why it's a kind of tracheal respiration. Okay, and most of the tetrapods, like we are also one of the tetrapods, because we have two pair of limbs. Okay, we have two hands, two legs. So among them, like tetrapods are, aves are also there. Okay, so yes, they are reptiles. So सभी के सभी इसी में आ जाएंगे. Okay, so tetrapods are also pulmonary respiration. Their mode of respiration is pulmonary respiration. Let's talk about the next thing, that is spiders and scorpion. Okay, इनका क्या है, book lungs है. So these are the different respiratory organs used by different animals. Okay, so yes, this is all about the respiratory organ. Yes. So let's talk about now human respiratory system. See, सांस तो हम सभी लेते हैं, आप भी लेते हैं, है ना, सब लेते हैं. But right now what you have to do, you have to observe you. खुद को ऑब्जर्व करना है आपको.
जस्ट ऑब्जर्व दैट. जस्ट अब आपको मेरे साथ सांस लेना बेसिकली, ठीक है. जस्ट ब्रीद इन. सो वेन एवर वी आर ब्रीदिंग इन, दैट मीन्स जो फर्स्ट स्टेप आया, दैट इज we have a basically pair of external nostrils, you can see. Okay, we have a pair of nostril, as you can see in that pictures. Okay, तो दो पोर्स हैं आपके नोज के, दैट इज नॉस्ट्रिल, वहां से आप सांस लेते हैं. ठीक है. सो फ्रॉम दैट नॉस्ट्रिल्स दैट लीड्स टू नेजल चैम्बर. आफ्टर नॉस्ट्रिल व्हाट विल बी देयर, देयर विल बी नेजल चैम्बर. ओके, दिस इज द प्रोसेस कि आपने एयर तो अंदर ली, बट वो एयर कैसे कैसे आपकी अल्टीमेटली एल्वियोलाई तक पहुंचेगी. ठीक है, दिस इज द पैसेज ऑफ दैट. सो नॉस्ट्रिल से नेजल चैम्बर तक एयर गई वाया वे, दैट इज नेजल पैसेज. ओके, सो नेजल पैसेज से नॉस्ट्रिल से एयर गई नेजल चैम्बर के अंदर. ओके, एंड देन दैट नेजल चैम्बर opens into the pharynx. Okay, that will gonna open in pharynx, as you can see in that picture. nostril से गई, अब कहाँ गई, सेकंड नंबर पे आ गई यहाँ पर pharynx के अंदर, as you can see this. Now what is that pharynx? See, this pharynx is, you know, common passage that this is for air and water, air and food, sorry, it's food. Okay, so air and food both are gonna enter in the pharynx. Okay, and nasal chamber से pharynx में enter होते हैं. Then the pharynx opens through the larynx region into trachea. Then this pharynx will open in trachea. How this will open in trachea? There will be a way, that is larynx. See, ये जो मैं बोल पा रही हूँ, जो आप बोल पाते हो, this is because of larynx. Okay, इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हैं साउंड बॉक्स, क्योंकि अगर larynx नहीं होगा तो साउंड बॉक्स आप बोल नहीं पाएंगे बेसिकली. ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट साउंड बॉक्स, व्हाइल द pharynx इज फॉर द इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड. सी, ट्रैकिया के दो साइड है, एक साइड larynx होता है और एक साइड होता है, यू नो व्हाट यू से, इट्स ईसोफेगस. ओके, दो साइड्स पे रहता है इसका, एक जगह होता है इसका ईसोफेगस ट्रैकिया के. क्लियर? अब आपको पॉइंट क्या याद रखना है. सी, हियर इन दैट केस वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रैकिया ओनली राइट नाउ. सी, ये जो ट्रैकिया है ना बेटा, इसकी जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ओके, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस. ओके, ओपनिंग जो है ट्रैकिया की उसे बोलते हैं ग्लॉटिस. जबकि अगर मैं बात करूं ईसोफेगस की, ऑल्दो हमें पढ़ना नहीं है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ डाइजेशन. ठीक है, हमें ये नहीं करना, बट स्टिल यू मस्ट रिमेंबर दैट. तो ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इज ग्लट. Okay, while for the in case of trachea it's glottis. And what is that trachea? Trachea is basically it's a wind pipe. Okay, जहां से हवा जाएगी. अब एक बात बताओ, you must have heard your parents say, hey, don't speak while you are eating something. खाना खाते टाइम you don't have to speak, नहीं बोलना कुछ. क्यों? क्योंकि क्या होता है, देखो pharynx जो है बेटा कॉमन पैसेज है, फूड का भी एयर का भी. ठीक है, इसके बाद उसको ट्रैकिया में ही आना है. अब ट्रैकिया अगर आप बोलोगे, हो सकता है वो वाइन पाइप के अंदर फूड चला जाए, अगर वो चला जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी. तो कहीं भी कैसे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. दैट्स व्हाई बोला जाता है कि बोलते खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए. ठीक. अब भाई बहुत अच्छा हमारा एक भगवान ने सिस्टम क्रिएट करके भेजा है, तो कुछ ना कुछ तो प्रिवेंशन करना है ना. सो ये जो ग्लॉटिस है, जो ओपनिंग है ट्रैकिया की, इसके ऊपर कवरिंग होती है एपिग्लॉटिस की. ओके, which will what it will do basically, it will going to switch off, और you can say flap off हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही आप खाना खा रहे हो, आप मान लो लेट से आप बोल रहे हो, जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए, बट लेट से आप बोल रहे हो. ठीक है, तो स्वेलोइंग के टाइम पे जब आप खाना निगलते हो, ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, ताकि ट्रैकिया के अंदर या फिर यू कैन से लेरिंग्स के अंदर, क्योंकि ट्रैकिया के जस्ट अबव लेरिंग्स है, उसके अंदर जो है खाना ना जाए. ओके, दैट्स व्हाई जो एपिग्लॉटिस है वो ग्लॉटिस की ऊपर कवरिंग होती है. Now let's talk about the trachea again. Okay, so what is that trachea? Trachea, you know, it's a straight tube which is extending up to mid-thoracic cavity. So where it is extending? It is extending up to mid-thoracic or thoracis, whatever you pronounce, cavity. Okay. Then the trachea will gonna divide in left and right primary bronchi.
Okay, primary bronchi. Now here the question which is very important, नीट में भी ये पूछा गया है इनफेक्ट, कि कौन से लेवल पे ये डिवाइड करता है. सो दैट इज एट फिफ्थ vertebrate, sorry, fifth thoracic vertebra. Okay, let me write this thing. Okay, fifth thoracic vertebra. Okay, if you see the structure, so there will be like around 12 vertebrae here then in your back. Okay, so that at the fifth level, at the fifth level of the thoracis, it will gonna divide in the left and right primary bronchi. Here, then that each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and tertiary. Okay, again then that primary will gonna divide to form secondary and tertiary bronchi. Here, that primary will gonna divide and form secondary and tertiary bronchi. You can say that. Okay. Each bronchi then, and bronchioles ending up in a very thin terminal bronchioles. Then that will gonna divide and form bronchioles. Okay. Now the question is, there will be again that bronchiole will gonna form alveoli. Let's just see that. So the trachea, now as this one, the trachea, that primary bronchi, that secondary and tertiary bronchi, and the initial bronchioles. That means you can see here trachea, primary, secondary, and tertiary bronchi. I am writing there, and bronchioles. Okay, and these bronchioles are supported by incomplete. As you can see, this area basically this C-shaped. Okay, this C-shaped ring. Here I am talking about this thing. So these all three structures are supported by C-shaped rings. Now, what are those C-shaped rings? What are those? See, this is basically to prevent the collapsing of that trachea. To prevent that collapsing of the trachea. जब आप सांस ले रहे हो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए वो, ठीक है. ये हायालिन की बनी होती है. किसकी बनी होती है सी शेप रिंग्स? हायालिन. इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल कार्टिलेजिनस फाइबर. जब आप सांस लेते हो इजीली कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए. जब आप खांसते हो तो ट्रैकिया थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट होता है, थोड़ा बहुत मूव करता है. इट्स बिकॉज ऑफ दैट हायालिन. And why this is C-shaped? Why this is incomplete? Because again, to prevent the or you can say to collapse slightly to allow to food to passes through esophagus. इसीलिए incomplete होता है ताकि जो food है proper से आपके esophagus में जा सके. जस्ट मैंने आपको बताया ट्रैकिया के एक साइड लैरिंक्स है और एक साइड क्या है ईसोफेगस. तो ताकि ईसोफेगस में खाना प्रॉपर चले जाए. जस्ट इमेजिन अगर प्रॉपर ही बंद होगा तो कैसे खाना जाएगा? जा ही नहीं सकता. इसलिए थोड़ा सा ये ओपन रहता है, इसलिए थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, जस्ट बिकॉज टू एंटर द फूड इन द ईसोफेगस. नाउ अल्टीमेटली we have bronchioles, as I just told you. लास्ट में जो हमारे पास बना दैट वाज टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. Now those terminal bronchiole will give rise to number of very thin or irregular, okay, or irregular walled vascularized structure. Okay, vascularized structure. And that's what you will say is alveoli. See, what are alveoli? These are the basically unit of lungs. Okay, these are the basically the site जहाँ पर proper gas of exchange होगा. Or you can say these alveoli are the primary site for gas exchange. क्योंकि अगर alveoli नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा. Okay, unit of lung. So this is very again most important question, like what is or which is known as unit of lung? That is alveoli. What are alveoli? These are the primary site for the gas exchange. Okay, that means highly vascularized. Matlab, if you see that structure, see alveoli is something like that. Okay, there is a basement membrane. Okay, this is alveoli and this is a basement membrane, and there is a blood capillary. Okay, तो vascularized means बहुत सारा blood है भाई इसमें. ठीक है, vascularized means rich of blood है. Basically, you can say that. Clear? Then you other than that, do you know
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मे डेफिनेटली आस्क इन योर एग्जाम, कि कितने अल्वियोलाई का नंबर है हमारे लंग्स में. ठीक है, सो 150 million. As you know, we have two lungs basically. Okay, let me say, okay, we have right lung, we have left lung. So 150 right lung में है, 150 left में, तो approximately we have 300 million alveoli. Okay, alveoli. Clear? Then second function जो है बेटा alveoli का, that is very important. Okay, this is why we are saying that this is the primary site for the gas exchange. Why? Because it alveoli क्या करती है बेटा, ये increase करती है. Okay, that will gonna increase surface area for gas exchange. Okay, like this, surface area for gas exchange. That's what you have to remember. Okay, I'll like this. Yeah. Then see, now what we have discussed right now, we have discussed about the network of the bronchi, as we are saying the primary bronchi, secondary, or the tertiary. Okay, that means we can say it's network of bronchi. Okay, so that network of bronchi, and or you can say bronchioles or alveoli. Okay, bronchioles, or what you can say, or you can say alveoli. These all constitute lungs. Now, if you see the structure of the lungs, what they are lungs? See, these are non-muscular. This is very important. Okay, these are non-muscular. Again, these are of two types, that is right and left. ऐसा नहीं है कि राइट और लेफ्ट लंग जो है वो सेम है. नो, डिफरेंट साइज है इनका, डिफरेंट इनका लेंथ है. क्यों? कोई छोटा कोई बड़ा, क्यों? अभी रीजन देखते हैं. जो आपका राइट लंग है बेटा, ये आपका ना स्मॉल होता है. नाउ व्हाई दिस इज स्मॉल? स्मॉल है बट थिक है. ठीक है, स्मॉल है बट थिक है. क्यों? क्योंकि बेटा जस्ट इसके नीचे ही लीवर प्रेजेंट है, तो लीवर को भी तो स्पेस चाहिए ना. उस जस्ट इस रीजन से राइट लंग आपका कैसा होता है, स्मॉल होता है और थिक होता है. जबकि आपका लेफ्ट लंग क्या है, एल से लेफ्ट, एल से लॉन्ग. ठीक है, लॉन्ग को आप यू कैन से और यू कैन से फॉर द थिक इट इज सिलेंडर. ठीक है, लॉन्ग और यू कैन से लार्ज. सिलेंडर शेप और यू कैन से थिन, पतला है. सिलेंडर शेप मीन्स थिन, पतला है. ठीक है, तो लेफ्ट लंग आपका ऐसा है. अब सी, जस्ट इमेजिन दिस इज द लंग, दिस इज वन लंग एंड लेट्स से दिस इज सेकंड लंग. ओके, जस्ट रिमेंबर दैट. तो इसके बेटा जो बाहर की तरफ यहाँ पर डबल लेयर प्रेजेंट है दोनों के बाहर. लेट मी show you that thing. See, as you can see here, the structure of that lung. See that two lungs, as you can see, this one and this one. Okay, this is covered by pleural membrane, as that you can see there. Okay, pleural membrane. So that that two lungs are covered by pleural membrane. Now, what is this pleural membrane? See the function of this pleural membrane. Okay, that is it will going to protect the lungs. And that pleural membrane is basically double membrane. Okay, double membrane. That means it has two sides, outer and inner. See, as you can see, this inner side is connected to the lungs, while this outer one is in contact with the thoracic cavity. Okay, outer वाली thoracic cavity के contact में है, जबकि अंदर वाली, inner वाली जो है वो lung के contact में है. You can say that. Clear? अब आप इस pleural membrane के अंदर ये yellowish color देख रहे हो, this is a kind of pleural fluid. जो फ्लूइड का काम क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, है ना, कि प्रोटेक्शन करेगा कि भाई कहीं जले कटे मरे ना, है ना. शॉक एब्जॉर्ब करेगा, एकदम से अगर कोई अटैक आता है, कुछ भी आता है, तो उसको शॉक जो एब्जॉर्ब करेगा, दैट विल बी प्लूरल. एंड वन मेजर फंक्शन, दैट मींस इट विल गोइंग टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन द लंग्स. ठीक है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन द लंग्स. क्लियर? सी, अब ये जो लंग्स है, ठीक है, लेट मी राइट दिस टाइम. लंग्स है कहाँ पर? एज यू नो, थोरेकिक चैम्बर में, क्योंकि इसका आउटर वाला पार्ट थोरेकिक कैविटी के कांटेक्ट में. ठीक है, तो थोरेकिक उसमें है आपके. सो थोरेकिक चैम्बर इट्स अ काइंड ऑफ एयर टाइट चैम्बर. एयर टाइट चैम्बर है ये. ठीक. अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है. सी, एज यू नो, लेट्स से ये लंग्स हैं. अभी लंग्स आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह से कनेक्टेड है किसी ना किसी पार्ट से, है ना. तो ये बेटा डोर्सली, अगर मैं बैक साइड की बात करूं, तो बेटा ये डोर्सली कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम से. ठीक है,
वेंट्रली आगे की तरफ से कनेक्टेड है स्टर्नम से, दैट स्टर्नम मीन्स ब्रेस्ट बोन। क्यों? लेटरली कनेक्टेड है ये रिब्स से, ठीक है, और बिलो एज यू कैन सी हियर दैट बिलो, okay, that lower side it is connected with the diaphragm. So lower side किससे connected है? diaphragm से, while lateral side कहाँ से connected है? let me write this. lateral कहाँ से connected है? rib से. That's what you have to remember. Clear? So you know what we have discussed so far, जितना भी अभी हमने पढ़ा बेसिकली अगर आप बोलो तो आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली दो पार्ट्स की बात करी है अभी हम, ठीक है। फर्स्ट वन वाज कंडक्टिंग पार्ट, क्लियर, and second is the respiratory or you can say exchange part, ठीक है, और you can say exchange part. सी एक्सचेंज अभी जैसे मैंने बताया प्राइमरी साइड क्या है एक्सचेंज के लिए? एल्वियोलाई। तो एक्सचेंज का मतलब जहां पर एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज होना है, ठीक है। यू नो यू कैन से you know what you can say exchange part, that is the site of actual diffusion of O2 and CO2, ठीक है। so it's actual diffusion of O2 or CO2 between blood and atmospheric air, you can say that. but what about that conducting part? what is that conducting part? सी अभी हमने जब डिस्कस किया हमने बताया कि स्टार्टिंग हमारा कहाँ से होता है? नॉस्ट्रिल पर, है ना। सो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियल्स, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक, यहां तक का जो पार्ट है इसको कलेक्टिवली बोला जाता है कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। नॉस्ट्रिल के बीच में लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फाइनली वी हैव टर्मिनल ब्रोंकियल्स। सो इन सबको कलेक्टिवली बोला गया है कंडक्टिंग पार्ट। नाउ देयर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन? ये फंक्शन ऑफ दिस कंडक्टिंग पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी आपकी नोज में एज यू नो हेयर्स होते हैं ना, उन हेयर्स का काम क्या होता है? Have you ever tried to think about that? See, the function of that, hairs that are present inside your nose or nostril is to filter the air. तो ये आपका कंडक्शन पार्ट का एक फंक्शन आ जाता है, ठीक है, फिल्टर एयर, एयर को फिल्टर करना, लाइक यू कैन से पैथोजन को क्या करना? रिमूव करना। पैथोजन मीन्स डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, उसके अंदर डस्ट भी है, सब कुछ को हटाना है तो वो कौन करेगा? कंडक्टिंग पार्ट करेगा, ठीक है। सेकेंड फंक्शन क्या करता है? ह्यूमिडिफाई करता है एयर को। ह्यूमिडिफाई मीन्स वाटर ऐड करता है उसके अंदर। कौन ऐड करता है? देयर इज अ रीजन, ओके, देयर इज अ रीजन इनसाइड द नेजल चैम्बर दैट वी गोना वर्क ऑन दैट, एंड दैट थिंग is, okay, that thing is nasal concave which is present in the nasal chamber itself. In nasal concave will gonna do that will gonna humidify the air, वाटर ऐड करेगा, ठीक है। एयर ह्यूमिडिफाई मीन्स एयर के अंदर क्या ऐड करेंगे? वाटर ऐड करेंगे, थोड़ा उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे बेसिकली, क्लियर। then what it will do, see as you know in summer the temperature of the air will be very high as compared to the winters. that means समर में टेम्परेचर अलग और विंटर में अलग, बट ऐसा तो नहीं है हमारी बॉडी भाई गर्मियों में गर्म एयर ले और सर्दियों में ठंडी ले, ऐसा तो नहीं होता। हमारी बॉडी क्या करती है? जो कंडक्टिंग पार्ट है बेसिकली दिस कंडक्टिंग पार्ट, व्हाट इट विल डू, इट विल मेक द टेम्परेचर ऑफ एयर इक्वल टू आवर बॉडी, ओके। तो टेम्परेचर जो एयर का है वो इक्वल करेगा किसके? ह्यूमन बॉडी के। कौन करेगा? ये कंडक्टिंग पार्ट करेगा, ओके। दैट्स व्हाई कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी दीज are two very important that we're going to do all the process, okay. Now let's talk about the steps in the respiration. See, जब हम respiration की बात करते हो कि this respiration just so when we talk about the respiration, तो basically दो बात होती है, या तो internal respiration होगा, ठीक है, जिसे आपका cellular respiration है ना, कैटाबॉलिक रिएक्शंस है, CO2 का ब्रेक, आई मीन योर फूड का ब्रेक डाउन हुआ, CO2 बनेगी, देन CO2 एक्सहेल करना एंड ऑल दैट, तो दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। एक आपका होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दैट जस्ट यू आर टेकिंग द एयर इनसाइड योर बॉडी और एक्सहेलिंग, ओके, दैट मींस ब्रीदिंग, दैट्स अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग के अंदर आपकी दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है, इनहेलिंग भी और एक्सहेलिंग भी, ठीक है। जो बेटा आपका ब्रीदिंग है इसका एक और नाम है दैट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन। यू हैव टू रिमेंबर दैट बिकॉज इन योर एग्जाम्स आपके टीचर्स आपको कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट पल्मोनरी वेंटिलेशन भी दे सकते हैं, ओके, जस्ट रिमेंबर दैट। So breathing, by which atmospheric air is drawn in, as you know, and CO2 rich alveolar air is released out. Okay?
This is a kind of external respiration. Rest one, all are internal respiration.